Hi everyone, my name is Laxmipriya. Welcome to our OPS channel. ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର OSSC ଓ SSSC ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ DMLD କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଆମର ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି, ବ୍ୟାଚ୍ ରହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲର ମେମ୍ବରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁରନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। Let's start the hematology and blood banking question discussion class part 13. First question रहुछि in normal osmotic fragility and hemolysis begin at which concentration of NaCl माने NaCl लो को concentration केते परसेंट concentration ने आमर osmotic fragility टा hemolysis हुए। ऑप्शन ए 0.3 to 0.35%, ऑप्शन बी 0.4 to 0.45%, ऑप्शन सी 0.5 to 0.55%, ऑप्शन डी 0.6 to 0.65%। करेक्ट आंसर होउछि ऑप्शन सी 0.5 to 0.55%। माने इन नॉर्मल ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी हेमोलाइसिस बिगिन एट 0.5 to 0.55% concentration of NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन रहुछि इन बीटा थैलासेमिया व्हिच हीमोग्लोबिन लेवल इज इंक्रीज्ड माने बीटा थैलासेमिया रे केते हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिनटा इंक्रीज्ड हुए। ऑप्शन ए HbA, ऑप्शन बी HbD, ऑप्शन सी HbF, ऑप्शन डी HbS। करेक्ट आंसर होउछि ऑप्शन सी HbF माने इन बीटा थैलासेमिया HbF hemoglobin level is increased। Next question रहुछि in spectrospecific examination dash hemoglobin shows a narrow band and 575 nanometer and a wider band at 540 nanometer। माने स्पेक्ट्रोमीटर एग्जामिनेशन भितर केते परसेंट हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिनटा शो करे नैरो बैंड रे थिबा 575 नैनोमीटर को आ वाइडर बैंड रे थिबा 540 नैनोमीटर को। ऑप्शन ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी सल्फे हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी मेथिमोग्लोबिन। करेक्ट आंसर होउछि ऑप्शन ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन माने इन spectroscopic examination ऑक्सी हीमोग्लोबिन shows a narrow band at 575 nanometer and a wider band at 540 nanometer। नेक्स्ट क्वेश्चन रहुछि ड्यूरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक examination dash hemoglobin shows 3 observation band at 618 nanometer to 575 nanometer and 538 nanometer। मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन समय रे को हीमोग्लोबिनटा शो करे 3 ऑब्जर्वेशन करिथिबा 3 बैंड्स को जोटा कि 618 नैनोमीटर 575 नैनोमीटर और 538 नैनोमीटर को। ऑप्शन ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी सल्फेमोग्लोबिन, ऑप्शन डी मेथेमोग्लोबिन। करेक्ट आंसर होउछि ऑप्शन सी सल्फे हीमोग्लोबिन माने ड्यूरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन सल्फे हीमोग्लोबिन shows 3 observation band at 618 nanometer 575 nanometer and 538 nanometer।
नेक्स्ट क्वेश्चन होची ड्यूरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी एग्जामिनेशन कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन shows weak band at which wavelength माने स्पेक्ट्रोस्कोपी एग्जामिनेशन समय कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन का शो करुवा वीक बैंड आउ वेवलेंथ केते ऑप्शन ए 570 नैनोमीटर ऑप्शन बी 418 नैनोमीटर ऑप्शन सी 534 नैनोमीटर ऑप्शन डी 630 नैनोमीटर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी 418 नैनोमीटर माने ड्यूरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी एग्जामिनेशन कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन शोज 518 नैनोमीटर weak band at 518 nanometer wavelength. Next question होची blood vessel are internally lined by a single layer of माने blood vessel टा internal lined by single layer of को cell थाए ऑप्शन ए प्लाज्मा सेल ऑप्शन बी क्यूबोइडल सेल ऑप्शन सी एपिथेलियल सेल ऑप्शन डी ब्लड सेल करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी एपिथेलियल सेल माने ब्लड वेसल आर इंटरनली लाइंड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल नेक्स्ट क्वेश्चन रोची सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेटलेट व्हिच प्रोमोट्स द आर्थेशन एंड एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड माने सब्सटेंसेस जे प्रोड्यूस करे प्लेटलेट को जोटा कोथिरे माने जोटा कि प्रोमोट्स थाए आर्थेशन रे जोटा एग्रीगेशन हुए प्लेटलेट ताको कौन कहुए ऑप्शन ए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऑप्शन बी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ऑप्शन सी प्लेटलेट फैक्टर 3 ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट माने सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय प्लेटलेट which promote the adhesion and aggregation of platelet is called adenosine diphosphate. Next question होची substances produced by a platelet which is necessary for the activation of certain coagulation factor is called माने substances produce हुए जोटा कि प्लेटलेट रे जे नेसेसरी करे एक्टिवेशन को जोटा सर्टन कोआगुलेशन फैक्टर रे थाए ताको कौन कह जाए ऑप्शन ए ATP ऑप्शन सी बी कोलाजेन ऑप्शन सी प्लेटलेट फैक्टर 3 ऑप्शन डी कालिकेरिन करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी प्लेटलेट फैक्टर 3 माने सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय प्लेटलेट व्हिच इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सर्टन कोआगुलेशन फैक्टर is called platelet factor 3. Next question रोची what is the molecular weight of fibrinogen माने fibrinogen ना molecular weight केते ऑप्शन ए 1,20,000 डाल्टन्स ऑप्शन बी 2,40,000 डाल्टन्स ऑप्शन सी 3,40,000 डाल्टन्स ऑप्शन डी 4,50,000 डाल्टन्स करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी 3,40,000 डाल्टन्स माने 3,40,000 डाल्टन्स द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फाइब्रिनोजेन नेक्स्ट क्वेश्चन रोची व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ फाइब्रिनोजेन माने फाइब्रिनोजेन न हाफ लाइफ केते ऑप्शन ए 1 to 2 days ऑप्शन बी 3 to 4 days 2 to 3 days ऑप्शन सी 3 to 4 days ऑप्शन डी 4 to 5 days करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी 3 to 4 days माने 3 to 4 days इज द हाफ लाइफ ऑफ फाइब्रिनोजेन नेक्स्ट क्वेश्चन रोची व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन माने नॉर्मल प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन ना नॉर्मल रेंज केते ऑप्शन ए 100 to 200 mg/dl ऑप्शन बी 200 to 400 mg/dl ऑप्शन सी 400 to 600 mg/dl ऑप्शन डी 600 to 800 mg/dl करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी 200 to 400 mg/dl माने 200 to 400 mg/dl is the normal range of plasma fibrinogen.
नेक्स्ट क्वेश्चन रोचे व्हाट इज द मॉलिक्युलर वेट ऑफ प्रोथम्बिन माने प्रोथम्बिन मॉलिक्युलर वेट केते ऑप्शन ए 63,000 डाल्टन्स ऑप्शन बी 65,000 डाल्टन्स ऑप्शन सी 67,000 डाल्टन्स ऑप्शन बी 72,000 डाल्टन्स करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी 72,000 डाल्टन्स माने 72,000 डाल्टन्स इज द मॉलिक्युलर वेट ऑफ प्रोथम्बिन नेक्स्ट क्वेश्चन रोचे द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर पीएनएच इज माने पीएनएच रो डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन ऑप्शन ए हैम्स एसिडिफाइड सेरम टेस्ट ऑप्शन बी ब्लड कल्चर ऑप्शन सी सुक्रोज लाइसिस टेस्ट ऑप्शन डी ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन करेक्ट आंसर रोची ऑप्शन ए हैम्स एसिडिफाइड सेरम टेस्ट माने द डायग्नोस्टिक टेस्ट for PNH is Ham's acidified serum test. Next question रोची which statement about CD55 and CD59 in the PNH is correct माने को स्टेटमेंट रे CD55 टा CD59 सहित PNH करेक्ट करे ऑप्शन ए CD55 and CD59 are increased on the red cell surface option B CD55 and CD59 are diminished on the red cell surface option C CD55 and CD59 are demonstrated by red cell agglutination option D no role of CD55 and CD59 in diagnosis of PNH correct answer होची option B CD55 and CD59 are diminished on the red cell surface माने CD55 and CD59 are diminished on the red cell surface statement about CD55 and CD59 in PNH is correct नेक्स्ट क्वेश्चन रोची इन पीएनएच माने पीएनएच भितर कौन थे ऑप्शन ए देयर इज मेनली एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस ऑप्शन बी देयर इज मेनली इंट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी हेप्टोग्लोबिन लेवल्स आर इंक्रीज करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी देयर इज मेनली इंट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस माने in PNH there is mainly intravascular hemolysis next question रोची dash clotting factor circulates as a complex with काइनोजेन और हाई मोलिकुलर वेट काइनोजेन माने को क्लटिंग फैक्टरटा सर्कुलेट होगी कॉम्प्लेक्स सहित काइनोजेन और हाई मोलिकुलर वेट सहित काइनोजेन थाए ऑप्शन ए स्टुअर्ट प्रावर फैक्टर ऑप्शन बी फाइब्रोनेज ऑप्शन सी हैजमैन फैक्टर ऑप्शन डी प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन अटेंडेंस एंटीसीडेंट करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट माने प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट क्लॉटिंग फैक्टर सर्कुलेट्स एज ए कॉम्प्लेक्स विथ काइनोजेन और हाई मोलिकुलर वेट काइनोजेन नेक्स्ट क्वेश्चन रोची प्रेकालिकेरिन इज सिंथेसाइज्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी आम बॉडी रे प्रेकालिकेरिन टा कोठी सिंथेसाइज्ड हुए ऑप्शन ए लिवर ऑप्शन बी किडनी ऑप्शन सी लंग ऑप्शन डी ब्लड करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए लिवर माने प्रेकालिकेरिन इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर पार्ट ऑफ द बॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन रोची व्हिच स्क्रीनिंग टेस्ट इज डन फॉर क्लासिकल हेमोफिलिया को स्क्रीनिंग टेस्ट डन करे क्लासिकल हेमोफिलिया रे ऑप्शन ए प्रोथम्बिन टाइम ऑप्शन बी क्लॉट रिट्रैक्शन ऑप्शन सी पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम ऑप्शन डी प्लाज्मा रिक्लासिफिकेशन टाइम करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी
पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम माने पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम स्क्रीनिंग टेस्ट इज डन फॉर क्लासिकल हेमोफिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रोचे व्हिच ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर आईएस माने को ब्लीडिंग डिसऑर्डरटा अकर करे डेफिशिएंसी फैक्टर आईएक्स को फैक्टर आईएक्स डेफिशिएंसी को। ऑप्शन ए पुरपुरा, ऑप्शन बी हेमोफिलिया बी, ऑप्शन सी हेमोफिलिया ए, ऑप्शन डी हेमोफिलिया सी। करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन बी हेमोफिलिया बी माने हेमोफिलिया बी ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर आईएच। नेक्स्ट क्वेश्चन होची फॉर द ट्रांसफ्यूजन इन पेडियाट्रिक पेशेंट गैस एंटीकोएगुलेंट कैन बी यूज्ड माने ट्रांसफ्यूजन समय रे पेडियाट्रिक पेशेंट रो को एंटीकोएगुलेंट यूज करा जाए। ऑप्शन ए डीटीए, ऑप्शन डी बी हेपारिन, ऑप्शन सी डबल ऑक्जेलेट, ऑप्शन डी नॉन ऑप्शन। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी हेपारिन माने फॉर द ट्रांसफ्यूजन इन पेडियाट्रिक पेशेंट हेपारिन एंटीकोएगुलेंट कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रोची डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड टू डिफेक्ट इन द सिंथेसिस ऑफ व्हिच कोआगुलेशन फैक्टर माने विटामिन के डेफिशिएंसी रे लीड करुवा डिफेक्ट जोटा कि सिंथेसाइज हुए को कोआगुलेशन फैक्टर रे। ऑप्शन ए फैक्टर भी सेकेंड आई, ऑप्शन बी फैक्टर एक्स, ऑप्शन सी फैक्टर आई एक्स, ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन माने डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड टू डिफेक्ट इन द सिंथेसिस ऑफ फैक्टर भी सेकेंड आई, फैक्टर एक्स एंड फैक्टर आई एक्स कोआगुलेशन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन रोची in which inherited disorder of platelet function the platelet count and individual platelet morphology is normal but they show a characteristic tendency to resist clumping together माने को inherited disorder टा platelet function को platelet count और individual platelet morphology रे सहित normal थाए but किंतु सेटा characteristic tendency को शो करे फॉर रेसिस्ट क्लम्पिंग माने क्लम्प करे टुगे मिसिकी। ऑप्शन ए ग्लाजमैन्स थ्रोम्बोस्थेनिया, ऑप्शन बी स्टोरेज ग्रानुल abnormality, ऑप्शन सी बॉन्ड सोलियर सिंड्रोम, ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए ग्लाजमैन्स थ्रोम्बोस्थेनिया माने ग्लाजमैन्स थ्रोम्बोस्थेनिया इज inherited disorder of platelet function. The platelet count and individual platelet morphology is normal but they show a characterized tendency to resist clumping together. Next question rochi the clotting time is prolonged when there is marked deficiency in one of the coagulation factor in which pathway माने clotting time prolonged है जदि मार्क डेफिशिएंसी हुए आउ कोआगुलेशन फैक्टर 1 थाए ताहने को पाथवे रे से जाए। ऑप्शन ए इंट्रिंसिक पाथवे, ऑप्शन बी एक्सट्रिंसिक पाथवे, ऑप्शन सी कॉमन पाथवे, ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन। करेक्ट आंसर रोची ऑप्शन ए इंट्रिंसिक पाथवे माने द क्लॉटिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग व्हेन देयर इज मार्क डेफिशिएंसी इन वन ऑफ द कोआगुलेशन फैक्टर ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन रोची क्लॉट रिट्रैक्शन इन लोयर्ड इन व्हिच कंडीशन माने क्लॉट रिट्रैक्शन टा लोयर्ड है को कंडीशन ने थाए। ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइटोसिस, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ऑप्शन सी ल्यूकोसाइटोसिस, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया माने क्लॉट रिट्रैक्शन इन लोयर्ड इन thrombocytopenia condition. Next question रोची which parameter is prolonged in liver disease congenital deficiency of coagulation factor in the extrinsic pathway and oral anticoagulant therapy माने को पैरामीटर प्रोलॉन्ग है लिवर डिजीज रे कॉन्जेनिटल डेफिशिएंसी करे और कोआगुलेशन फैक्टर भितर एक्सट्रिंसिक पाथवे सहित ओरल एंटीकोआगुलेंट थेरापी दिए।
ऑप्शन ए ब्लीडिंग टाइम, ऑप्शन बी क्लॉट रिट्रैक्शन, ऑप्शन सी फाइब्रोनाइटिक एक्टिविटी, ऑप्शन डी प्रोथ्रोम्बिन टाइम। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी प्रोथ्रोम्बिन टाइम। माने प्रोथ्रोम्बिन टाइम पैरामीटर इज प्रोलॉन्ग इन लिवर डिजीज, congenital deficiency of coagulation factor in the extrinsic pathway and in oral anticoagulant therapy. Next question रोची उर्बोनाइनोजेन इन द यूरिन इज टेस्टेड बाय। माने यूरिन टेस्ट रे उर्बोनाइनोजेन भितर कौन थाए कहा कौन देख उर्बोनाइनोजेन कौन कहा पाई थाए। ऑप्शन ए हाई सल्फर टेस्ट, ऑप्शन बी ऑलिस आल्डिहाइड रिएजेंट, ऑप्शन सी फोचेस्ट रिएजेंट, ऑप्शन डी बेंडिक टेस्ट। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी ऑलिस आल्डिहाइड रिएजेंट। माने उर्बोनाइनोजेन इज द इन द यूरिन इज टेस्टेड बाय ऑलिस आल्डिहाइड रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रोजी एंटी ग्लोबुलिन टेक्निक इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ व्हिच टाइप ऑफ एंटीबॉडी। माने एंटी ग्लोबुलिन टेक्निक को डिटेक्शन पाई को एंटीबॉडी टेस्ट करा जाए। ऑप्शन ए कंप्लीट एंटीबॉडीज, ऑप्शन बी इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी बाइवैलेंट एंटीबॉडीज। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज। माने एंटी ग्लोबुलिन टेक्निक इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन रोची द सेंसिटाइजेशन ऑफ आरबीसी विथ आरएच एंटीबॉडी कैन बी अकॉर्ड थ्रो। माने सेंसिटाइज है आरबीसी भितर आरएच एंटीबॉडी अकॉर्ड होइकी रहिले अकॉर्ड कहा पाई हुए। ऑप्शन ए ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन बी प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑप्शन। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। माने द सेंसिटाइजेशन ऑफ आरबीसी विथ आरएच एंटीबॉडी कैन बी अकॉर्ड थ्रो ट्रांसफ्यूजन एंड प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन रोजी हाउ मेनी परसेंट ऑफ बायोवाइन एल्बुमिन इज यूज फॉर टेस्टिंग आरएच ग्रुपिंग। माने केते परसेंट बायोवाइन एल्बुमिन यूज करा जाए आरएच ग्रुपिंग टेस्टिंग रे। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 22%, ऑप्शन डी 32%। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी 22%। माने 22% ऑफ बायोवाइन एल्बुमिन इज यूज्ड इन टेस्टिंग आरएच ग्रुपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होची इन डायरेक्ट आंथिमोन ग्लोबुलिन टेस्ट डैश इज यूज एज ए स्पेसिमेन। माने डायरेक्ट आंथिमन ग्लोबुलिन टेस्ट रे कौन यूज करी स्पेसिमेन भाव में कौन यूज करा जाए। ऑप्शन ए सेरम, ऑप्शन बी आरबीसी, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी प्लेटलेट। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी आरबीसी। माने इन डायरेक्ट एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट आरबीसी इज यूज एज ए स्पेसिमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच टेस्ट इज पॉजिटिव इन ए हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न एंड इन ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। माने को टेस्ट रे पॉजिटिव हेमोलाइटिक डिजीज रे न्यूबॉर्न बेबी रे थाए आउ ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया मध्य थाए। ऑप्शन ए डायरेक्ट कॉम्बोज टेस्ट, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट कॉम्बोज टेस्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑप्शन। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए डायरेक्ट कॉम्बोज टेस्ट। माने डायरेक्ट कॉम्बो टेस्ट इज पॉजिटिव इन हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न एंड इट इन ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होची इनडायरेक्ट कॉम्बोज टेस्ट इज डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीजेन ऑफ व्हिच ब्लड ग्रुप सिस्टम। माने इनडायरेक्ट कॉम्बो टेस्ट डन करे कौ एंटीजेन थिबा कौ डिटेक्शन ने जोटा कि ब्लड ग्रुप सिस्टम रे। ऑप्शन ए डफी, ऑप्शन बी किड, ऑप्शन सी केल, ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन। माने इनडायरेक्ट कॉम्बो टेस्ट इज डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीजेन ऑफ डफी, किड एंड केल ब्लड ग्रुप सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन रोजी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इज सप्रेस्ड बाय गिविंग RhIg to RhD नेगेटिव मदर विदिन डैश आवर ऑफ डिलीवरी।
माने आंटी डी आंटीबॉडीज प्रोडक्शन बेलरे सप्रेस्ड होइथिबा आरएच आईजी गिव करेज आरएच डी नेगेटिव जोटा कि मदर थाए विदिन डिलीवरी केते आवर भितर ऑप्शन ए 24 आवर ऑप्शन बी टू 48 आवर ऑप्शन सी 72 आवर ऑप्शन डी 96 आवर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी 72 आवर माने प्रोडक्शन ऑफ एंटी डी antibodies is suppressed by giving RHIG to a RHD negative mother within 72 hours of delivery. Next question रहुची which blood group system is determined by the productive allele called LE माने को ब्लड ग्रुप सिस्टम टा डिटरमाइन करे प्रोडक्टिव आलेल को जोटा कि कॉल कहा जाए एली ऑप्शन ए केल ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑप्शन बी लेयूस ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑप्शन सी डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑप्शन डी पी ब्लड ग्रुप सिस्टम करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी लेयूस ब्लड ग्रुप सिस्टम माने लेयूस ब्लड ग्रुप सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्टिव आलेल कॉल्ड एली नेक्स्ट क्वेश्चन रोची केल ब्लड ग्रुप सिस्टम हाज हाउ मेनी एंटीजेन माने केल ब्लड ग्रुप सिस्टम रे केते एंटीजेन थाए ऑप्शन ए 12 ऑप्शन बी 22 ऑप्शन सी 32 ऑप्शन बी 42 करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी 22 माने केल ब्लड ग्रुप सिस्टम हाज 22 मेनी एंटीजेन ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन रोची JK and JKB antigen were present on which blood group system माने JK और JKB antigen present को blood group system रे थांती ऑप्शन ए केल ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑप्शन बी LW ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑप्शन सी किड ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑप्शन डी लुथेरन ब्लड ग्रुप सिस्टम करेक्ट आंसर रहुची ऑप्शन सी किड ब्लड ग्रुप सिस्टम माने JKA एंड JKB एंटीजन किड ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रेजेंट इन किड ब्लड ग्रुप सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन रोची LW एंटीजन इन प्रेजेंट ऑन व्हिच टाइप ऑफ रेड सेल माने LW एंटीजन टा को टाइप रो रेड सेल रे प्रेजेंट थाए ऑप्शन ए RHD पॉजिटिव ऑप्शन बी RHD नेगेटिव ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी ए पॉजिटिव रेड सेल करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी माने LH एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन RHD पॉजिटिव एंड RHD नेगेटिव of red cell next question rochi in the case if the recipient is AB positive and donor is O negative dash compatibility test show agglutination माने गोटे केस रे रेसिपिएंट जदि AB पॉजिटिव थाए और डोनर जदि O नेगेटिव थाए ताने कंपैटिबिलिटी टेस्ट को agglutination द्वारा करा जिवो ऑप्शन ए मेजर क्रॉस मैचिंग ऑप्शन बी माइनर क्रॉस मैच ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नॉन ऑप्शन करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी माइनर क्रॉस मैच माने इन द केस ऑफ इफ द रेसिपिएंट इज AB पॉजिटिव एंड डोनर इज O नेगेटिव माइनर क्रॉस मैच कंपैटिबिलिटी टेस्ट शो agglutination नेक्स्ट क्वेश्चन रोची डैश ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव एट 4 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ब्लड माने को ऑर्गेनिज्मटा सर्वाइव करि पारे नै 4 डिग्री सेल्सियस रे बा ब्लड स्टोरेज रे ब्लड जोटा कि ब्लड स्टोरेज को जोटा 4 डिग्री सेल्सियस रे थाए ऑप्शन ए टी पैल्डियम ऑप्शन बी लेशमियानिया ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नॉन ऑप्शन करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए टी पैल्डियम माने टी पैल्डियम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव एट 4 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ब्लड नेक्स्ट क्वेश्चन होची ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ब्लड इन CPD डैश इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू RBC माने ब्लडटा स्टोरेज होइकी रहिथिबो CPD रे ताने कोन यूज करा जे एनर्जी RBC को एनर्जी प्रोवाइड करबा पय ऑप्शन ए सोडियम सिट्रेट ऑप्शन बी एसिड फॉस्फेटेज ऑप्शन सी ग्लूकोज ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी ग्लूकोज माने ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ब्लड इन CPD ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू RBC
नेक्स्ट क्वेश्चन रोची इन व्हिच टाइप ऑफ क्रॉस मैचिंग रेसिपिएंट्स रेड सेल इज मिक्सड विथ डोनर सेरम माने को टाइप रो क्रॉस मैचिंग टा रेसिपिएंट रेड सेल ले मिक्स करी डोनर मिक्स करा जाए डोनर सेरम सहित ऑप्शन ए मेजर क्रॉस मैचिंग ऑप्शन बी माइनर क्रॉस मैचिंग ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नॉन ऑप्शन करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी माइनर क्रॉस मैचिंग माने माइनर क्रॉस मैचिंग रेसिपिएंट रेड सेल इज मिक्सड विथ डोनर सेरम नेक्स्ट क्वेश्चन रोची ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट प्रीवियसली कलेक्ट फ्रॉम द सेम पर्सन इज कॉल्ड माने ट्रांसफ्यूजन करा जाइथवा ब्लडटा और ब्लड प्रोडक्ट प्रीवियसली कलेक्ट जो करा जाइथवा जदि सेटा सेम पर्सन हुए ताको कोन कुआ जाए ऑप्शन ए डायरेक्टेड ट्रांसफ्यूजन ऑप्शन बी अनडायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन ऑप्शन सी ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन ऑप्शन डी नॉन ऑप्शन करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन सी ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन माने ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट previously collect from the same person is called autologous transfusion. Next question रोची for the treatment of bone wheelband disease or in factor X AAA deficiency which blood product is used माने ट्रीटमेंट समय भोल wheelband disease रे आउ फैक्टर भी X AAA deficiency रे जदि को ब्लड ग्रुपटा यूज करा जाए ब्लड प्रोडक्टटा ऑप्शन ए फ्रेश फ्रोजेन प्लाज्मा ऑप्शन बी क्रायो प्रेसिपिटेड ऑप्शन सी रेड ब्लड सेल ऑप्शन डी टी ग्लिसेरोलाइज्ड ब्लड करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी क्रायो प्रेसिपिटेटेड माने फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोन wheelband disease और इन फैक्टर X AAA deficiency क्रायो प्रेसिपिटेटेड ब्लड प्रोडक्ट इज यूज्ड नेक्स्ट क्वेश्चन रोची द वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड कॉलेड रिप्लेसमेंट विदाउट रिस्क ऑफ हेपाटाइटिस और एड्स व्हिच ब्लड प्रोडक्ट इज यूज माने एक्सपेंशन वॉल्यूम रे थिबा कॉल्ड रिप्लेसमेंट समय रे विदाउट रिस्क रे हेपाटाइटिस आउ एड्स रे थिबा को ब्लड ग्रुप को ब्लड प्रोडक्ट यूज करा जाए ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल ऑप्शन बी ह्यूमन सेरम ग्लोबुलिन ऑप्शन सी फैक्टर भी AAA कॉन्सेंट्रेशन ऑप्शन बी एल्बुमिन बाय प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शन करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी एल्बुमिन बाय प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शन माने फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड कॉलेड रिप्लेसमेंट विदाउट रिस्क ऑफ हेपाटाइटिस और एड्स व्हिच ब्लड एल्बुमिन बाय प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शन ब्लड प्रोडक्शन इज यूज्ड नेक्स्ट क्वेश्चन रोची the human leukocyte antigen system is controlled by which supergene माने ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजेन सिस्टम को कंट्रोल करिया पे को सुपरजेन यूज करा जाए ऑप्शन ए मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ऑप्शन बी माइनर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ऑप्शन सी डायरेक्ट हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ऑप्शन डी नॉन ऑप्शन करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स माने द ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजेन सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट क्वेश्चन रोची व्हिच सेल इन द पेरिफेरल ब्लड इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइज एंड एंटीजन इवन इन विट्रो माने को सेल पेरिफेरल ब्लड रे कैपेबल थाए रिकॉग्नाइज हेतिबा एंटीजन इवन इन विट्रो भितरे ऑप्शन ए प्लाज्मा सेल ऑप्शन बी टी लिम्फोसाइट्स ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन बी टी लिम्फोसाइट माने टी लिम्फोसाइट सेल इन द पेरिफेरल ब्लड इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइज एन एंटीजन इवन इन विट्रो नेक्स्ट क्वेश्चन होचे द डिग्री ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन ड्यूरिंग सेल डिविजन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग रेडियोएक्टिव माने डीएनए रिप्लेसमेंट समय रे डिग्री हेतिबा सेल डिविजन ने मेजर हेतिबा रेडियोएक्टिव यूज करा जाइबा को कोन हुआ जाए ऑप्शन ए थायामाइडिन ऑप्शन बी थायरोक्सिन ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी
ऑप्शन डी नॉन ऑप्शन। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए थायामाइडिन। माने द डिग्री ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव थायामाइडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन रोची कोला कलर्ड यूरिन इज सीन इन ऑल कंडीशन एक्सपेक्ट। माने कोला कलर्ड यूरिन कौन सीन करा जाए। ऑप्शन ए पीएनएच, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी थैलासेमिया, ऑप्शन डी ब्लैक वाटर फीवर। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी थैलासेमिया। माने कोला कलर्ड यूरिन इज सीन इन ऑल कंडीशन बट थैलासेमिया एक्सपेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रोची ब्रिलियंट क्रिस्ली ब्लू स्टेन्ड ब्लड फिल्म्स गिव्स इनफॉरमेशन अबाउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। माने ब्रिलियंट क्रिस्ली ब्लूटा स्टेन ब्लड फिल्म रे इनफॉरमेशन गिव करे किंतु एमान भितर कोटा नुहे। ऑप्शन ए एच इंक्लूजन, ऑप्शन बी हेंज बॉडीज, ऑप्शन सी रेक्टिकुलोसाइट काउंट, ऑप्शन डी बेसोफिलिक स्टिपलिंग। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी बेसोफिलिक स्टिपलिंग। माने ब्रिलियंट क्रिस्ली ब्लू स्टेन्ड ब्लड फिल्म्स gives information about the following except basophilic stippling. Next question होची photometric reading system and continuous flow system are। माने photometric reading system और continuous flow system कौन। माने ऑप्शन ए ऑटोमेटेड सेल काउंटर, ऑप्शन बी ऑटोमेटेड ब्लड ग्रुप सिस्टम, ऑप्शन सी ऑटोमेटेड स्टेनिंग, ऑप्शन डी नॉन ऑप्शन। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी ऑटोमेटेड ब्लड ग्रुप सिस्टम। माने फोटोमेट्री रीडिंग सिस्टम एंड कंटिन्यूअस फ्लो सिस्टम आर ऑटोमेटेड ब्लड ग्रुप सिस्टम। आज क्लास 8 रहा। जहाँ डाउट अच्छी से मैंने नेक्स्ट कमेंट करें ना क्लास जॉइन मत रही। जय जगन्नाथ।